So we are creating a project, new indexdb, ng new indexdb. When we press yes and we select scss, so ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है. Just wait for a minute. So we have created, now we are running the project. Ng served address port 4100, and we are running a project. Mhm. So guys, it is used to store the maximum amount of 50 MB data in a web browser, and you can use it, the data. Basically, all the dynamic website use the indexdb to store the data because it works with mobile devices also. So we are running it. It run basic project of Angular, and now we are creating an indexdb. We are creating a called storage.js JavaScript file. We are writing windows.indexdb equals windows.indexdb or windows.mozilla. This sign defined or operator, and it's identify if it is a Chrome browser or Mozilla. MOS defined as Mozilla and WebKit defined as a Chrome browser, or MS is defined as a Internet Explorer. So step 2, IDB transaction. We are transacting one value. It is defined as transactions, and we are repeating the value from the up to defined, but we are writing inside it as a WebKit ID B transaction. Okay, so now step 3, IDB key range. Key range is define the key of the value of indexdb. So this 3 step is important to identify the browser, which browser we are putting the indexdb, we are storing the data on which browser. It's defined that. So we create a variable db and we create a variable request. So if condition if not dot index db, then we get an alert message that your browser does not support it, is not supported indexdb. और फिर हमें करना है windows dot indexdb dot open. इससे we define it as a name of the indexdb. So मैं बीच बीच में हिंदी बोलूँगा, बीच बीच में इंग्लिश बोलूँगा, so that most of the peoples get attracted to it and knows the simplistic language. So we created now request dot on error functions. ये functions में जो भी errors आएंगे वो हम define करेंगे console log से, और हमें वो console log में दिखेंगे कुछ भी errors होगा तो. And on success we call an event. So ये event क्या कॉल होगा, db equals to request dot result. मीन्स अगर
कोड टू डू, ये इंडेक्स डीबी क्रिएट हुआ तो इसका रिजल्ट आएगा सक्सेस। और रिक्वेस्ट डॉट अन अपग्रेड नीडेड, ये फंक्शन डिफाइन होगा कि हमें उस इंडेक्स डीबी में एक कौन सा टेबल क्रिएट करना है वो। तो ऑब्जेक्ट स्टोर सॉरी db डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोर, तो यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे कोड टू डू। और फिर तो पहले इसको फॉर्मेटिंग कर देते, फिर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाते हैं और इसको डिफाइन करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल को। सो स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड के अंदर हम assets स्लैश स्टोरेज डॉट जीएस, हम इस जावास्क्रिप्ट फाइल को डिफाइन करेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। सो ये कॉल होगा हमारे पूरे प्रोजेक्ट्स में। Oh, I make a mistake. Okay. Okay, sorry. Okay. So हम अब एक सर्विस फाइल बनाएंगे ng generate, g for generate, s for service, local storage। so ये होगा मेरा सर्विस फाइल जिसमें मैं कमांड लिखूंगा add update delete। so एड्स फंक्शन डिफाइंड होगा कि हमें इंडेक्स डीबी में वैल्यू पास करना है, और गेट फंक्शन डिफाइंड होगा कि हमें वैल्यू फेच करना है फ्रॉम इंडेक्स डीबी टू रीड द वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स डीबी, इसलिए हम गेट मेथड यूज करेंगे। और डिलीट मेथड टू डिलीट द वैल्यू विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडेक्स डीबी, तो हम डिलीट करेंगे। इंडेक्स डीबी बेसिकली you can define as a MySQL or MS SQL like that, but it is basically used to store the data। इसमें ना कोई फॉरेन की या प्राइमरी की ऐसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ डेटा को स्टोर करने में मदद करता है वेब ब्राउज़र में, और उस स्टोर हुए डेटा को गेट करने में, और अगर उसकी गरज वहाँ पे नहीं है तो वो डिलीट करने में भी मदद करता है। सो इसकी मदद से हमें, जैसे कि डायनेमिक वेबसाइट में आपने देखा होगा, लॉगिन करने के बाद अगर हमने पेज को रिफ्रेश किया तो वो रिफ्रेश होने के बाद भी हमें होम पेज पे ही लेके आता है, लॉगिन पे नहीं लेके आता, बिकॉज इट स्टोर द डेटा इन इंडेक्स डीबी। सो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है ऐड गेट एंड डिलीट फंक्शन। अभी हम डिक्लेयर करेंगे इसको एज अ वेरिएबल db डॉट एनी। ये हमें स्टोरेज डॉट जीएस फाइल्स के जो भी डेटा है वो यहाँ पे डिफाइन करेगा वो। सो हम ग्लोबली इसको डिफाइन करेंगे पब्लिक डॉट स्टोरेज नेम, जो हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टोरेज में है। we have to pass the same name so that it not crash the indexdb। so constant request equals to db dot section square bracket round bracket this dot storage name। so हमारा storage name है code to do db। रीड राइट ये डिस्क्राइब करेगा कि हमें डेटा को रीड करना है या राइट करना है। डॉट ऑब्जेक्ट स्टोर this dot storage name dot put method। सो बेसिकली हम पुट मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, टू ऐड एंड टू अपडेट विद द वन फंक्शन।
और फिर यहाँ पे वैल्यू एंड की नेम पास करेंगे। सो हम दो पैरामीटर बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एंड की नेम जो फ्रंट एंड से पास करेंगे, जो मुझे स्टोर करना है, और उस स्टोर का एक की नेम होगा जिससे मुझे उसको फैच करने में आसानी हो जाएगी। सो गाइस, now we are creating a function request on error or on success to define it that हमारा जो फंक्शन है उसमें कुछ इशू है या नहीं है। सो अगर वो ऑन सक्सेस में होगा तो वो फंक्शन कॉल करेगा और फिर इफ कंडीशन में वो डिस्क्राइब करेगा दैट इवेंट डॉट टारगेट रिजल्ट। सो अगर वो होगा, उसमें वैल्यू होगा, तो वो सक्सेसफुल इंसर्टेड होगा इंडेक्स डीबी में, और एल्स इट विल डिफाइन एज अ सो नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अगर डीबी होगा तो ही ये फंक्शन चलेगा। सो इतना पूरा पार्ट हम इफ कंडीशन के अंदर डालेंगे। तो कंसोल लॉग चेक करेंगे, अगर होगा तो हम सक्सेसफुल मैसेज प्रिंट करेंगे, और एल्स उसको बताएंगे कि आपने कुछ इशू है, एरर है आपके फंक्शंस में। सो basically we have created add functions. Now we have to create a promises. Basically promises एक new concept है JavaScript में, so we are using this promises to hold a data. इसमें दो पैरामीटर्स पास होते हैं, एक तो है resolve और एक reject. It's a predefined parameters that promises defined. So we are using this promises to return and hold the data till it not get executed properly. So हमारे promises की वजह से उस data को time मिलेगा to hold it. So अगर वो सक्सेस हुआ तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, या फिर रिजॉल्व के अंदर हम उसमें एक रिटर्न वैल्यू देंगे फॉल्स जब वो एरर देगा, मीन्स रिजेक्टेड। सो बेसिकली फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं हम फॉर्मेट में। So we have created a parameter, we have created a promises, and now we have want to create a async function. A synchronous function is defined to wait till the function get executed in a proper manner. So this is used, the two keyword async is defined in the top of the function, and inside the function we are using await to wait the function till that value get executed. So let's go to next function. So the step was the same, just we have to change some little changes was there inside it. So we copy this and we just paste over here, and we just change this put to get function, and here only a key name, because in get function we are not passing a value, हम सिर्फ जो वैल्यू इंडेक्स टीबी में है हम उसको फैच करेंगे। सो हम डिलीट में भी डाल देते हैं वो कॉपी पेस्ट करके। सो बेसिकली ये होगा डिलीट।
सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट। सो डिलीट में भी की नेम की ही ज़रूरत है, वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम डिलीट में वैल्यूज़ नहीं पास करेंगे। हम जो वैल्यू इंडेक्स डीबी में है उसे डिलीट करने के लिए ये फंक्शन बना रहे हैं। सो ऐप डॉट कंपोनेंट में जाएंगे, उसमें जो भी डेटा है सब डिलीट मारेंगे और फिर हम क्रिएट करेंगे फ्रेश सिंपल insert update and delete with the help of indexdb. So we are creating a button on click function equals to double unit add but add slash update. So we just created one add button update. So I'm creating this one button for both functionality add and update, but you can create it separately. You can define it put and add function. So now I created a get functions and delete function, just copying this and write a delete. Okay, so here I just write get. So it fetch on click, it fetch the data from indexdb. Now I want to insert the data, so I create input type equals to text, and inside it styling, just giving the width and the height. So height 50 pixel, that's it. So just save this and let's try to run it, and you serve dash dash port 4100 4200 dash O. So wait for a minute. So I get an error. So basically the error is I not define any function in app.component. So I want to define the function in app.component. So I'm defining right now add function, get function, and delete function. So I just showing you the error of a single simple error that you can face this error. So now I'm running this again and it's refreshing this page. So let's refresh it, cancel the old one, and let's wait for the good. तो हमने प्रोजेक्ट so basically the UI is like this. I know it's really not proper in a manner, so I am just adding a BR over here so it can come below the box so it looks, and I just show you over here index.db how I created, and I got an error which is showing me that the storage was not created. So I'm creating this, I'm showing this error because you will be able to learn this, you will understand it, and you can create your own functions of indexdb with the help of this tutorial. So what I'm missing is
that what I'm missing is that I just want to define this db event equals to target.result. So I didn't get the value. Now I get the value and it's successfully done. Now I created indexdb code to do db. Inside it, code to do db. So now I just defined as id to get the value from the text box. So txt value, and I just make more spaces. Just increase the size of width. So I just write constructor defined local storage, which I created a service, local storage dot service. Okay, so I just link the service as a variable local storage. So let txt value equals to document dot get element by id, and I defining the id is txt value dot value. So in the TypeScript, mostly we have to use this HTML inputs element and the round braces. So it will help you to get the value from ID. Otherwise, it may occurs the issues. So just console log it and try it. What it's get. So it's loading. We are refreshing the page. Okay. So we just type code to do and did it. Okay. So it's working fine. It's fetch getting a data from it, and now we just call that function add, which we created in a local storage, and we are passing a value and a keyframe. So the value is from left hand side, and the keyframe is name my name is a key, and the value is txt value. So I just refreshed it and show you how it inserted the value add. Here I get a alert message and I just refresh it inserted my name and code to do the value. So inserted is working fine. Now I just define a label to get the value and show you that the value is fetching from indexdb. So I just created a id your value is, and I just create one variable public. So in get function I just get a function my name, then I will pass, and then is a promise I get the value. If response is test, then I just get inside a variable. So event dot target dot result. So it's so just refreshed it, just delete the unwanted code, and now we are checking it again. So it's showing the code to do. Let's change it and add it. So subscribe my channel,
So it's showing subscribe my channel, so do subscribe my channel. So that's it. Your value is to subscribe my channel. Okay, so now we just defining a delete function which we are creating in the, and we want to delete as my name. So we are defining a my name, then dot response, no, yeah, that response, and just we defined it if it is delete, so show me the alert message that my data is deleted. Okay, so this is a ekdam simple, just a simple tutorial to understand the indexdb concept, and you can create your own indexdb. So just add something, try to check get method my your value is subscribe my channel, and just delete, and I just check it, like share, and to check like share, it's working, and it's come like share, now delete, it's gone. So like share and subscribe to my channel, and thank you for watching, and we will come in the next video.